Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is types of non-formal education. आज का हमारा मौजू है what are the types of non-formal education. Dear students, in our previous lecture we have discussed about meaning of non-formal education, objectives and advantages of non-formal education. As I have earlier said, non-formal education offers a midway approach between formal education and informal education. Non-formal education is partly formal and partly informal. It is semi-structured, partly intentional and partly incidental. So, dear students, today we will discuss about what are the various types of non-formal education. So first one is distance education. Concept of distance education. Dear students, distance education is a modern system of non-formal education. It is imparted through correspondence or postal courses, contact programs, electronic media like radio, television, video and audio cassettes, and other audio-visual aids. Dear student, the terms which are used for distance education are distance education, distance teaching, open education, open learning, open school, open university, university of the air, university without walls, tele-university, out of school education, correspondence learning, correspondence school, correspondence teaching, correspondence courses, correspondence education, continuing education, lifelong education, non-formal education, off-campus study, home tuition, independent learning, independent study, teach yourself program. These are the some names of distance education. चूंकि मैंने पहले ही कहा है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन. डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा डिस्टेंस एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है, तो मैंने भी कहा डिस्टेंस एजुकेशन इज ए मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, इट इज इम्पार्टेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस और पोस्टल कोर्सेज, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एटसेट्रा. ये जो डिस्टेंस एजुकेशन एक आई कैन से एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड रिसीव करता है थ्रू डिस्टेंस मोड, यानी घर बैठ के आप आज तालीम हासिल कर सकते हो, चाहे पोस्टल एड्रेस के जरिए या कोई कॉरस्पॉन्डेंस के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप घर बैठ के कोई भी डिग्री, कोई भी नॉलेज, कोई भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. और इस टाइप ऑफ एजुकेशन को कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन. So dear students, on account of variety of terms used for distance education, Professor F.R. Jones 1983 called it a bewildering nomenclature. It should be noted that these terms are associated with non-traditional and non-conventional teaching learning program. These terms derive their names from the medium of communication. Dear students, concept of distance education includes definitions of distance education, analysis of definitions of distance education, difference between distance education and formal education, distance education and open education, distance education and correspondence education, and features of distance education. अब हम डेफिनेशन देखेंगे, यानी मेन डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन गिवन बाय डिफरेंट एजुकेशनिस्ट्स एंड आई कैन से स्कॉलर्स. जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो दी है जैक फॉक्स ने. जैक फॉक्स ने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में क्या कहा है? डिस्टेंस एजुकेशन इज ए मोड ऑफ लर्निंग विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which distinguish it from the campus-based mode of learning.
एंड इसका कहना है ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये डिफरेंट होती है फॉर्मल एजुकेशन से। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा है, फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम फोर वॉल्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी कमरे के जो फोर वॉल्स ऑफ रूम जो हम स्कूल के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे वो ट्रेंड टीचर्स होते हैं, वहां पे फिक्सड कैरिकुलम होता है, वहां पे फिक्सड से फिक्सड वहां पे डिसिप्लिन भी होता है, वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, तो वहां पे ट्रेंड टीचर्स भी होते हैं फॉर्मल एजुकेशन में। लेकिन ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, न तो आपके पास फिक्सड टाइम टेबल है, न तो आपके पास फिक्सड मतलब आई कैन से फिक्सड कैरिकुलम है, आपने क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। हाँ ऑब्वियसली इसमें भी मतलब आपको डिग्री मिल जाती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन इंटरेस्ट। आपने कब एजुकेशन हासिल करने हैं, कब आपने एंट्री करने है, कब आपने एग्जिट करना है, कब से री एंट्री करने है, कब से एग्जिट मतलब होना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लर्नर्स। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन है जो डेफिनेशन दी है गिवन बाय बोर्जी होमबर्ग। यानी बोर्जी होमबर्ग उसका कहना है डिस्टेंस एजुकेशन is the various forms of study at all levels which are not under the continuous immediate supervision of tutors present with their students in lecture rooms or on the same premises, but which nevertheless benefit from planning, guidance and tuition of a tutorial organizations. Distance education includes all those teaching methods in which because of the physical separateness of learners and teachers, the interactive as well as the pre-active phase of teaching is conducted through print, mechanical and electronic devices. So dear students, this is all about meaning and definitions of distance education. Thank you. Have a nice day.